Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. There's a video on daily news and editorial analysis which I'll be covering from two important newspapers. The first being the Hindu and the other is Indian Express. So the most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 14th of February. The first topic is Center Approved Plan for Police Modernizations. जो पुलिस की मॉडर्नाइजेशंस की बात की गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Second, important for the EOS-4 launch. This is Earth Observatory Satellite. Third, government to sell stake in the Life Insurance Corporation. We'll see the detail, the percentage of stake that would be sold out. The second last is Winter Bird Monitoring Program for 2021 and 22. And the last is an editorial that India's semiconductor dream, right? So this is an editorial from the Hindu, which will give you an idea how the semiconductor sector is something which is going to boom and what are the roadmap that government should come in with. Apart from this, at the end of this video, there will be some MCQ based question. These question is going to be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And before I start, just to tell you that you can subscribe to our channel that is on YouTube. And if you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And we have a newest version of app 2.0 which you can download. मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर पाएंगे. So the first news that is Center approve the plan for police modernizations. पुलिस की जो modernizations है या upgradations की बात करें उसको लेकर के डिस्कशन है. And this is something which is important for general studies paper 2. Government policies and intervention for the development of various sectors and issues arising from it, right? So पुलिस की अपग्रेडेशन, पुलिस की मॉडर्नाइजेशन, पुलिस की खास करके अगर बात करें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? So the center has approved the continuations of mega police modernization scheme for the year 2025-2026 with a financial outlay of 26,275 crore rupees. So this is a continuation program which Ministry of Home Affairs has always been doing for a long, right? इसकी जो अप्रूवल आई है that is for the duration till 2026 and it moves forward to modernize the improving function of police, states and union territories. तो जो upgradation है, modernizations की जा रही है, वो होगी state forces as well as for the union territories. Now the plan of scheme, how this scheme is going to be executed, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वो एक इंपॉर्टेंट नोडल बॉडी जो सारे फोर्सेस को कंट्रोल करती है इन इंडिया में, इवन दे कोऑर्डिनेट विद द स्टेट गवर्नमेंट, राइट, एज इन पार्ट ऑफ द एडवाइस दैट इज गिवन. तो किन किन चीज़ों पे, किन किन एस्पेक्ट्स पे ध्यान दी जानी है इस स्कीम के थ्रू. द फर्स्ट इज developing high-tech forensic laboratories and investigation tool which would help both the center as well as the state government and the union territories. A scheme for internal security, that is for law order adaptations of modern technology by the police. Third is assistance that will be given to the state in terms of control of narcotics. तो narcotics के control के लिए भी एक अलग से assistance दी जानी है state government को. And the last is strengthening the criminal justice system by developing a robust forensic setup in our country. So here government is looking forward to increase the level of forensic setup that we have in our country, right? तो पूरी ground से लेकर के in terms of narcotics and forensic, everything has to be increased. Now, security related expenditures की अगर बात करें, the central outlay is almost 18,839 crore rupees that has been earmarked especially for the Jammu and Kashmir. और उसके अलावा जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज़ हैं या फिर जो इंसर्जेंसी के नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरियाज़ हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड अमाउंट को भी मार्क किया गया. एंड अ सम ऑफ 4,846 crore would also be given to the central government for the modernizations of state police forces. तो स्टेट पुलिस फोर्सेस की अपग्रेडेशन, उनको और मॉडर्न बनाने के लिए भी एक स्पेसिफिकली डेडिकेटेड अमाउंट को एलोकेट की गई है. Now, Supreme Court has intervened several times when it comes to police modernizations और उसने बहुत सारी बातें कही हैं in the landmark judgment of Prakash Singh, right? Prakash Singh judgment is very important. Whenever you are writing about the police modernizations और इसके बारे में police upgradations के बारे में बात हो तो Prakash Singh is something which is essentially that has to be written in mains paper, right? So make sure you write about this. And it has given 7 directives to the states, even to the center, right? However, due to lack of political will, ये directives पूरी तरह से implement नहीं हुई है. So, which are the 7 directives that was given by the Supreme Court? We'll discuss that also.
So these are the list of the 7 directives that was given by the Supreme Court. First, the Supreme Court has called for the constitution of State Security Commission, which is very important in terms of coordination between the state. Fixed 2-year tenure for the DGP, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उनकी जल्दी से ट्रांसफर ना हो या फिर बहुत लेट तक वो अपनी पोजीशन पर रिटेन नहीं रहे, इसके लिए 2 ईयर की टाइम फिक्स करने की बात की है ना। 2 ईयर टर्म फॉर SP एंड SHO, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, उससे कम भी ना हो, उससे ज़्यादा भी ना हो। दिस अप्लाई बोथ to the superintendent of police and the state house officer, that is called SHO। हमारे जो metropolitan cities है वहाँ पे SHO होते हैं, and even to the local police station is called police station officers, right? Separate investigation and LNO function, this should be there। Setup of police establishment board, ताकि जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसके पूरी तरह से ट्रैक रखी जा सके। Now, setup of the police complaint authorities at state and district level. This is again something very important to bring up transparency in the functioning of police. And the last is setup of National Security Commission at the central level. So these were the 7 recommendations that was given by the Supreme Court to reform the police, right? तो अगर आप इसको मेंस में लिखेंगे, ये सारे 7 पॉइंट्स आपको वहाँ मैंडेटरी लिखने पड़ेंगे। Now the other news, that is the importance of EOS 4 launch. This particular news is important for General Studies paper 3. Achievement of Indian science and technology in indigenous technology and developing of new technology. तो आफ्टर सक्सेसफुल लॉन्च के बाद अगर बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अब अपने बिजनेस पे वापस आ गई है, जहाँ पे फिर से अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट को एक अटैम्प्ट की जा रही है। वी हैव सीन सम अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट इन 2019, जहाँ पे बहुत सारे मिशंस फेल हुए थे इंडिया के। नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड दैट पोस्ट कोविड दिस सेक्टर इज गोइंग टू बूम। दिस इज द फर्स्ट ऑफ द 19 लॉन्च दैट इसरो हैज प्लान्ड इन 2022। और इसरो ने ये भी प्लान किया है जो चंद्रयान 3 है उसके अलावे जो गगनयान मिशन है, दीज 2 important मिशन वुड ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस ईयर एजेंडा। Now what is ESO4? अगर अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट की बात करें, दिस वाज एक्चुअली प्लान टू बी लॉन्च्ड इन नवंबर 2020, बट ये अभी डिले हुई है बिकॉज ऑफ द कोविड-19। दिस इज अ माइक्रो सैटेलाइट दैट इज येट टू बी लॉन्च्ड and the launch has failed in August, right? So ESO4, the fourth in the series of the Earth Observatory satellite, is being launched under the new generic name. इससे पहले भी इसरो ने बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च की है, which is named as Cartosat, Oceanosat, Resourcesat, GSAT and CatSat. So these were some of the part that was already being successfully conducted under ISRO's mission. Now advantages of Earth Observatory Satellite 4, किस स्पेसिफिक जगह पे ये काम करेगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट इज़ डिजाइनेटेड टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी इमेजेस, चाहे वो एग्रीकल्चर्स पे हो, फॉरेस्ट्री हो, प्लांटेशंस हो, फूड मैपिंग हो, सॉइल मॉइस्चर्स हो, इवन हाइड्रोलॉजी। सो दीज आर सम ऑफ द स्पेसिफिक एरिया they would be mapping. They will give you clarity about how the flood is going to be the part of any region in our country. कुछ और benefits की अगर बात करें, the other include land and forest mapping monitoring, mapping of resource like water or mineral fishes, weathers and climate observations, soil की जो assessment होती है, किस जगह पे किस तरह की soil की productivity है, and even which crop should be done there. So these are some of the things that would be provided under ESO4. Now, geospatial counter mapping is something very important at this point of time. So all these facilities, all these advantages can be availed via EOS4. Now, this is an infograph, basically एक picture है जहाँ पे आप 2-3 satellites के categories दे सकते हैं. This is SLV3. This is for the low Earth orbit. Again, ASLV. This is again for the low Earth orbit, but इसकी जो payload capacity है वो high है. Now, PSLV. This is for the synchronous transfer orbit. This is GSLV Mark III, which was one of the most successful GSLV in India. And the last is GSLV Mark III. This is 2 and this is 3, right? So payload has a difference. Here the payload is 2200 kilometers and here the payload is 4000 kilometers. So this is how it makes the difference. This small and minute information can again help you in the prelims examination. So do check it out. कहीं पे भी कोई भी information आपके लिए relevant हो सकती है. Now moving to the other news, that is government to sell stake of LIC. This particular news is important for General Studies paper 3. Indian economy and issues related to planning, mobilization, resource growth and development. So under this news, the government of India has finally decided that they would dilute its special stake of 5% of the LIC
by launching its IPO, that is initial public offering, and it would invite public to participate in the equity. तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि जो 5% इक्विटी है LIC की वो सेल आउट की जाएगी. With the launch of LIC IPO listing, LIC will also come under the direct scanner of SEBI, that is Security and Exchange Board of India, जो कि comply करेगी SEBI के सारे norms और requirement के साथ. Now this will also enhance the transparency of LIC operations और overall जो governance है, corporate governance है जो LIC की, उसको भी strengthen करेगी, because this would be now under the complete supervision of the Security and Exchange Board of India. Now IPO reserved की जाएगी कुछ LIC की policy holders के लिए. So this is expected to launch its initial public offer and has asked the policy offer, जो policy holders हैं वो अपने जो परमानेंट अकाउंट नंबर है जिसको पैन नंबर भी कहते हैं वो उसको अपडेट करेंगे. दिस इज अ मैंडेटरी पार्ट दैट हैज टू डन. नाउ इंश्योरेंस एज अ मेजर, इट इज क्लियर दैट it won't be able to participate with the IPO subscription without updating their PAN details. So this is a mandatory part because government would be definitely tracking whomsoever is buying the IPO. And as per the proposed plan, 10% of the listed LIC IPO would be reserved for their policy holders. So this is a good news for all the policy holder जिनके पास भी LIC की policies होंगे, उसमें total जितने भी stakes होंगे जो IPO sell की जाएंगे 10% reserve होगी उनके policy holders के लिए. Now the IPO is expected to open a subscription of the fourth quarter in the current financial year. तो आने वाले चौथे quarters में इसकी IPO release की जा सकती है. Now management of LIC IPO की अगर बात करें, if you look into the other part, especially with regards to the management, government ने 10 merchant bankers को appoint किया है, which include Goldman Sachs and Citigroup Markets Private Limited, Nomura Financial Advisors, और इस तरह के जो important financial groups हैं उनको hire की गई है to manage the IPO of LIC. And Central aim to raise around 75,000 crore rupees. This would be India's largest ever initial public offering, right? Now looking into the other part, कि अगर LIC की बात करें, इसकी सबसे ज़्यादा अभी तक की AMU है, that is asset under management, right? तो जो फंड मैनेजर हैं वो ऑलमोस्ट जो फंड पूरी जो मैनेज हो रही है AMU टोटली अगर बात करें कितनी कॉर्पस है इस पर्टिकुलर फंड की, दिस इज 39.56 ट्रिलियन. बहुत ही ह्यूज अमाउंट है जिसको सारे फंड मैनेजर मैनेज करते हैं. एंड देयर इज मोर देन 3.3 टाइम्स ऑफ AMU विद ऑल द प्राइवेट इंश्योरेंस दैट इज अवेलेबल इन इंडिया एंड 1.1 टाइम्स ऑफ द इंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज. तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी जो AUM है, मतलब टोटल जो स्ट्रेंथ है LIC की वो कितनी बड़ी है. Its investment in stock represent around 4% of the total market capitalization of the National Stock Exchange till 30th of September. Now, market spread की अगर बात करें, this is an infograph that will give you an idea about the domestic market share of the life insurance corporation that was under the other issues respective countries. So top insurance की अगर बात करें इंडिया में, this is life insurance corporation जिसकी market share almost 64.1% है, right? If you look into the UK part, यहाँ पे Aviva PLC जिसकी 23% market share है, चाइना की Ping an insurance company which has only 21.3%, मलेशिया AJA BDH 20.6%, जापान के Nippon Life Insurance with 16.2%, साउथ कोरिया की Samsung Life Insurance with 14.8%, and United States Northwestern Mutual Life Insurance Company with 8.4%. So you can see the top part of India and the market share in terms of insurance has been occupied by the Life Insurance Corporation of India. Now moving to the other news, that is Winter Bird Monitoring Program for 2021-2022. This particular news is important for General Studies Paper 3, Conservation, Environmental Pollutions, Degradation and EIA, that is Environmental Impact Assessment. So let's understand the detail of this news. So recently, Winter Bird Monitoring Program ने रिकॉर्ड किया है that there is a presence of 203 bird species including 53 non-resident species, and they are directly from the district of Mysore, Mandya and Chamayanagar. So these are the three important districts from where these all species were reported, and the team have collected the data from 147 locations that were spread along these three locations belt between January 14 and February 30. नाउ इससे पहले भी सर्वे की गई थी, जो पुरानी सर्वे है उसके अगर डेटाज को देखें, सो इट फाउंड दैट दिस रीजन हैज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल व्हाट इट हैज रिकॉर्डेड इन द पास्ट.
अभी के स्पीसीज में 2003 स्पीसीज रिकॉर्ड की गई थी दिस ईयर, एंड लास्ट ईयर इट वाज रिकॉर्डेड अराउंड 204. सो नंबर इज नॉट दैट वेरिएबल, इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. एंड द बर्ड काउंट टू वेर हेल्दी दिस ईयर, जहाँ पे टीम ने रिकॉर्ड किया ऑलमोस्ट 34,360 of the species, underlining the sea diversity of the birds that is supported in this region. So anytime with regards to the diversity of the birds, this reason is something very important and significant, and UPSC can also ask you a prelims question with this particular map, right? So do check it out, कहाँ किस जगह पे locations identify की जा सकती है. Now, the other news is an editorial, India's Semiconductor or a Dream. This particular news is important for General Studies Paper 2, that is government policies and intervention for the development of various sector and issues arising from it, design and implementations. So under this editorial, I'll be bifurcating this editorial into 4 important subheads. The first is packages for the semiconductor fabrications manufacturing, raw material supply and the way forward. पूरी एडिटोरियल में बात की गई है किस तरह से एक रोड मैप होनी चाहिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की इंडिया में, राइट? सो विल सी एंड अंडरस्टैंड द डिटेल ऑफ दिस एडिटोरियल. सो कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम ये देखी गई है दैट इट हैज ब्रॉट द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई टू अ फ्रेजिलिटी, एक ऐसी फ्रेजिलिटी जहाँ पे पूरी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो सप्लाई चेन है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज नॉट वर्किंग एंड इम्पोर्ट were completely down, although India is looking forward for its own semiconductor manufacturing because government of India ने इसके लिए अलग से ही PLI schemes भी लाई हुई है, right? This become very important for your mains also, so make sure you have good ample point to write in mains. तो अगर बात करें सिचुएशन और कब वर्स हुई, जब हमारी डिपेंडेंस थी ईस्ट एशियन के फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग पे, इवन टू सम पार्ट ऑफ अदर कंट्रीज वेयर वी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो चाइना और यूएस की ट्रेड वॉर थी वो भी उसने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग पे. नाउ द यूएस हैज़ अनाउंस्ड 50 बिलियन पैकेज टू क्रिएट जो फाउंड्रीज होती हैं इस फैक्ट्रीज में जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के पार्ट्स बनाए जाते हैं उसके लिए. नाउ इंटेल इज एडिंग द मोर फाउंड्रीज टू एरिजोना, राइट, एंड इट इज डेवलपिंग फाउंड्रीज बिजनेस टू मेक चिप, जहाँ पे ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और यूएमसी जो है वो इस तरह के चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं. Now, packages of semiconductor. Government has provided a package. So, Indian government has approved $10 billion package for incentive the manufacturing for the semiconductor in our country. Although PLI schemes bhi hai, which is going to be very important in this part and these aspects. So, government has drawn out the list of incentives जहाँ पे इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स जो अपने यूनिट लगाएंगे इंडिया में उनको भी लोकल पार्टनर के साथ मदद दी जाएगी एंड इवन सम रिबेट एंड अदर पार्ट of the government aid would also be provided. Now, semiconductor fabrication manufacturing की अगर बात करें, so getting the fab culture or even fabrication manufacturing done, India has to build it, design and part. This is something very important for India to make it Atmanirbhar in terms of the semiconductor manufacturing. अगर बात करें इंडिया की, India has the largest number of chip designer outside of the US who is working in state of art system and technology. So we are nowhere, in terms of technology, हम कहीं भी किसी country से पीछे नहीं, but the implementations and the financial aspect is creating a problem. So for example, Karnataka has boasts almost 85 fiberless chip design in the house of the various global companies. Now to create an ecosystem, ये ज़रूरी है कि जो fabrication manufacturing है उसके important aspects को देखी जाए. तो semiconductors खास करके जो कंट्री के अंदर बन रही है जो इंडिजिनस प्रोडक्शंस हैं उनको इंक्रीज की जाए. सो द टोटल डिमांड ऑफ द सेमीकंडक्टर स्टैंड बाय अराउंड $24 billion and this is expected to grow around $80 to $90 billion by 2030. So this is the potential of this sector and definitely जो PLI schemes हैं this is going to aid in this part. Now this is an infograph to give you an idea how this lucrative market is of the semiconductors. तो बात करें अगर इंटेल की जो कि एक सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर या चिप बनाने वाली कंपनी है, इसकी ओवरऑल मार्केट शेयर 15.6% की एंड रेवेन्यू ग्रोथ इज 3.7, फॉलोड बाय सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, देन एसके हाइनिक्स, माइक्रोन टेक्नोलॉजी है, उसके बाद क्वालकॉम इज अ कंपनी विच बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग द चिप फॉर द मोबाइल फोन्स, उसके बाद ब्रॉडकॉम्स, टेक्सास इंस्टोरियम, मीडियाटेक भी एक मोबाइल के चिप्स बनाती है और जो अलग शेयर्स हैं वो 48.6%, सारे मेजॉरिटीज ग्लोबली है, राइट. सो द लार्जेस्ट वुड बी इंटेल एंड सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स. ना रॉ मटेरियल सप्लाई चेन की बात करें जो यहाँ पे चैलेंजेस हैं, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट.
because जो work है that has to be done in a manner that supply chain capability has to increase specifically for India. और इंडिया की अगर इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर एसोसिएशंस की मुताबिक चले, so the opportunity is there in terms of the supply processed raw material like mineral and gases, जहाँ पे fabrications और ATMP, that is assembly, testing, marketing and packaging industries can have a huge potential and this can further grow. अपार्ट फ्रॉम इंसेंटिवाइजिंग एफडीआई, जो कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों पे लिबरलाइज भी किया इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में, वी नीड टू वर्क अपॉन द सप्लाई चेन एंड वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन इनकरेजिंग द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग्स, जहाँ पे अलग अलग वर्टिकल्स, चाहे वो रिसर्च और डेवलपमेंट्स में हो, मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल्स हो, इन सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है. Now, moving on the way forward, how you can conclude your answer. Suppose if you're writing in mains paper, तो सबसे पहली जो ज़रूरत है वो है semiconductor industries को. They need to change the new age technology where they need to have innovations part, यहाँ पे design, material और processes level को improve की जा सकती है. This has to be advanced in a manner where it is actually functioning with the positive, right? Premium research institutions की ज़रूरत है, जैसे Indian Institute of Science है, which is working on terms of research and development and designing manufacturing hubs. So these institutions and even some other IITs, जो इंडिया में even IIT Bombay, IIT Madras can play a very crucial role. Further, government must focuses on emerging technology, जैसे कि lidar है, आपने देखा होगा, अगर most of you must be aware of lidar technology that is also being used in phones nowadays. A phased array is another part that has to be disproportionately used, जहाँ पे कुछ और लेवल ऑफ एडवांसमेंट के साथ हम इसे, इसकी जो ब्रॉडनेस है, इसकी जो रीचेबिलिटी है, उसको भी बढ़ा सकते हैं विथ एन एडवांटेज. Now, by working aggressively in the new cutting edge technology, India can definitely ensure a part of Atmanirbhar in terms of semiconductor. But before that, a long milestone has to go. The administration part, the logistic parts, the supply chain, the manufacturing, the fabrications, everything has to come along a way. So this was all about this particular editorial. Now moving ahead with the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday questions. For first answer, the correct option is C for first question actually. And for second question, the correct answer is B. Today's MCQ for practice, आपको बताना है new start nuclear treaty recently seen in news has been between which among the following countries? Iran. It is between India and Japan, India and Russia, USA and Russia, and Japan and Russia. So do check it out which among the following is the correct answer. So now moving to the other question, that is the National Center for Sustainable Coastal Management is located among which one of the following cities? That is New Delhi, Chennai, Gurugram or Hyderabad. So you have to look for the correct answer and also look into the working of National Center for Sustainable Culture and Management, because a question is expected on this part, right? So this was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQs. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.